Hello everyone. Hello Faizan sir. Yes, sir. Yes sir. Am I host now? अच्छा आप पूछो मैंने। Your co-host now. Oh, okay. Thank you sir. Thank you. Okay students. A very good morning to all of you. Hope I'm audible. Okay. Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you. Just 1 minute. So very first thing, what students needs to do is to leave their good morning text in the chat box. Okay. I'm going to mute all of you now. Yes. And let's begin the slideshow. Okay. Okay, so is the screen visible now? Okay, so yes, Chinmay. Thank you, Chinmay. Okay, so yesterday we discussed a very important point, and that is World Bank Group. Okay, so what I'm going to do today I'm going to share with all of you this particular PPT which you can see on the screen. Okay, this particular PPT I am going to share with all of you in our GAT group. Okay, kindly check the GAT group after 1 or 2 hours. Okay, I'm sharing this just to just to keep you in touch with what is going on in our lectures. Okay, definitely I'm going to share the entire month current affairs. As soon as we are done with this particular month, but before that, in order to keep you in touch with the immediate lectures, I'm going to share this particular PPT on daily basis. Okay, so that you can revise it by yourself. You need not to take the screenshots now onwards. Am I clear on this? Am I clear? Okay, did you get what I'm trying to tell you? Yes. Okay. So let's begin. So World Bank Group. Okay. So why it was in news? World Bank Group, because United States President recently appointed an Indian American Ashok Michael Pinto to represent the United States in IBRD. Okay, what IBRD is and what our World Bank Group is, that also we have discussed. Okay, so World Bank is basically called as a Bretton Woods institution. It was established in 1944. Okay, so what is World Bank's aim is? The aim of World Bank is to reduce poverty. Okay, to reduce poverty and to support economic development. How it does it? How it does it? It acts as an organization that offers developmental assistance to middle income and low income and the poorest countries as well. Okay, so this is what important point of World Bank. And then we discussed very important thing, all the 5 organizations under World Bank Group. Okay, this IBRD and IDA together makes the World Bank. Okay, and all 5 together makes the World Bank Group. Okay, so we had discussed this. Okay, so please go through it once when I'll send this to you in our today itself. Okay, chalo. Then we discussed 2021 Commonwealth Youth Games, which is postponed, and why this youth game was postponed because of the Tokyo Olympics. Okay, see 2021 Commonwealth Youth Game. See, there are 2 different games. Okay, one is Commonwealth Games and the other is Commonwealth Youth Games. Okay, you must be able to gauge the difference between both. Okay, and both of them are organized by whom? Commonwealth Games Federation, in short CGF. Okay, the Commonwealth Youth Game is organized by Commonwealth Game Federation, which was founded in 1932 and it is currently based in London. Okay, the games held every 4 years, and there is a age restrictions to Commonwealth Youth Game, and that age restriction is 14 to 18 years. Why? Because it's a youth game. Okay, and why this has been postponed now? Because
This particular Commonwealth Youth Game was supposed to be held in 2021, and as we have already know that this Tokyo Olympic is been postponed to 2021. Now, in order to avoid the clashes between the youth games and the Tokyo Olympics, this particular Commonwealth Youth Game is being postponed, and it is postponed to 2023 now. Am I clear on this? Okay. So it is postponed to 2023, and why it was postponed? Because of to avoid clashes with Tokyo Olympics. Okay. चलो. Then International Firefighters Day हमने देखा था, ठीक है, observed every year on 4th May, ठीक है, in order to recognize and honor the sacrifice of firemen. Is that clear? ठीक है, सेंट फ्लोरियन के फीस्ट में मनाया जाता है. फीस्ट मीन्स स्मृति दिन, याद रखना है इसको. फीस्ट मीन स्मृति दिन. ओके, चलो. अब आता हूं मैं कल के एक पॉइंट पे जो हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, हमें अजरबैजान को लोकेट करना था मैप पर. ठीक है, अजरबैजान के सहारे से वी विल लुक एट सम इंपॉर्टेंट मैपिंग थिंग्स इन आवर टुडेज लेक्चर. ठीक है, सी दिस इज वेरी बिग कजाकिस्तान. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, is Kazakhstan a landlocked country? First of all of you know the difference between landlocked country and open country. How many of you know what is mean by landlocked country? Fast, be proactive in the lecture, very fast. Okay, it will definitely help you. Yes, so landlocked country. So can we call Kazakhstan a landlocked country? Yes, some are saying yes, some are saying no. I want to ask the reason also. Yes, why yes, and no, why no? Fast, huh? Fast. So someone is saying surrounded by water. Landlocked means not connected with international seas. Very good, Harsh. Caspian Sea is a lake. Okay, Anish Parke. Because of Caspian Sea. Okay, Dolus. So because of Caspian Sea means what? Then because of Caspian Sea, we will call it a landlocked country or not then? Surrounded by countries on all sides. Very good, Chinmay. Yes, sir, because it is surrounded by water. Okay. It is landlocked country. Okay. Aniket is saying yes. So आपके जो opinion से divided है. Some are saying yes, it is landlocked. Some are saying sir, not, it is not landlocked because it is opening into the Caspian Sea. Okay. So now let me tell you the answer. Okay. First of all, see, we will call Kazakhstan a landlocked country. It is definitely is a landlocked country. Even though it opens into the Caspian Sea, it is landlocked country. Now why? This is because of Caspian Sea does not open to any major seas in the world. Okay? Caspian Sea itself is a landlocked. You're getting my point? Caspian Sea itself is a landlocked. Why it is landlocked? Because Caspian Sea is not opening to any major sea like Pacific Ocean or Indian Ocean or here Atlantic Ocean. Okay? If this particular sea or this particular border opens to a major sea or ocean in the world like Atlantic, Indian Ocean or Pacific, then we will call it a non-landlocked country. But since neither Caspian Sea opens to these major oceans nor Kazakhstan opens to these major oceans, and that is how we will call Kazakhstan a landlocked country. Is it clear to all of you now? Need not to Google it. I'm here to answer. Okay, no need to Google it. I'm here to answer, and I hope you have listened to me carefully and you understood the concept of landlocked country or non-landlocked country. Is that clear? Now onwards, your opinions must not be divided on this. Okay, if you see a particular country or a particular sea or a lake is opening to a international seas, okay, open seas like Atlantic, Indian Ocean or Pacific, then only you will call that country as a landlocked. As a non-landlocked, otherwise that country will be landlocked. Am I clear on this? समझ रहा है? ठीक है, चलो.
सो इस पर भी हम किसी दिन एक प्रॉपर लेक्चर लेंगे कि दुनिया की कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वो लैंडलॉक है या नहीं है, एंड ऑल दैट कंफ्यूजन विल बी एड्रेस्ड। ओके, चलो। सर अभी इनको इंडिपेंडेंस चार्ज है क्या अल्ताफ सर? क्या सर? रशिया के इन्फ्लुएंस में कि कंट्री अपने आप में नहीं समझ रहा सर, मुझे क्या बताया आपने? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जी जी, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है ना सर, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट है ना, वो यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद से ही इंडिपेंडेंट बन चुके थे, सिंस 1991 सर। नहीं, लेकिन उनका अभी भी रशिया का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है क्या अलग से? नहीं नहीं, रशिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है, मगर ये अपने अलग से अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना सकते हैं सर। अब नहीं रहा वो। यूएसएसआर जब था ना सर, यूएसएसआर बिफोर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991, हाँ, तब तक वो सारे रशिया के अंडर आते थे, ये यूएसएसआर का पार्ट था मुझे सारा। मालूम है, लेकिन अभी इन लोग का नाम नहीं आता ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान किधर, तुर्कमेनिस्तान किधर है? हाँ, ये सर, ये वाला। तुर्कमेनिस्तान का वो चाइना का बहुत सारा वो गिर का हिस्सा जो है ना, हाँ वो अ, इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो चाइना से क्लेम करे। हाँ, हालांकि वो चाइना से, नहीं मतलब मुझे समझा नहीं। चाइना का युगिर जो है ना, उसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं। हाँ, उइगुर, उइगुर का जो इशू है, हाँ, शिनजियांग हाँ प्रोविंस बोलते हैं हम जिसको। हाँ, तो वो जबरदस्ती चाइना ने कैप्चर किया है। ओके। तो ये कंट्रीज इतना स्ट्रांग है क्या, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो चाइना के बॉर्डर में आ रहा, या कजाकिस्तान इतना बड़ा है जो वो जो एथनिक माइनॉरिटी है उनको चाइना के पास से ले सकते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर नहीं, अभी वो क्योंकि वो शिनजियांग प्रोविंस चाइना के अंडर आता ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं है कि चाइना के साथ टक्कर ले सके। मेरा ये बोलना है कि इंडिया ने रशिया को सपोर्ट करके, हाँ अगर ये कंट्रीज अगर रशिया के इन्फ्लुएंस में आते तो इनको वहां से, जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिक्स किया ना, बलूचिस्तान का डिवीजन हाँ 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 अजीत दोवल को बेच के, वैसा ये इधर भी करना चाहिए। कजाकिस्तान को, हाँ किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को उचका के देने का, और हाँ, चाइना के वो एरियाज को कैप्चर करने की बात करने का। ऐसा ऐसा होना चाहिए, दिस इज ऐसा व्हाट यू आर होना सेइंग। चाहिए। ऐसा हो रहा क्या? मतलब ये जो हमारे अमर अकबर एंथनी है ना, कौन अजीत कौन? दोवल और शंकर, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? जयशंकर, हाँ। हाँ, तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है क्या इनका? क्या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? नहीं सर, ऐसा चाइना, चाइना मारा गया? क्या बोले? तो ऐसा करंट अफेयर्स में स्टेटमेंट मारा गया किसी ने? नहीं जैसा सर, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता ना, पॉम्पो, पॉम हाँ पॉम हाँ, करके बजा के जाता। माइक पोम्पेओ, हाँ। माइक पॉम्पो आता और हम्म, इंडियन ओशन से प्लेन उड़ाता और चाइना के खिलाफ बोल के जाता। जी जी। वैसा इनके लोग कोई बोलते क्या? सर देखिए, इंडिया की जब जहां तक बात है सर, शिनजियांग में इंडिया इतना इंटरफेरेंस नहीं करता सर। हमारा जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था ना चाइना के साथ सर, उसमें एक काफी क्लियर बात है कि हम नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स। तो तो ठीक है इंडिया सर। वैसे, नहीं सर, इंडिया वैसे भी इनडायरेक्टली भी, जैसा इंडिया बलूचिस्तान में करता था ना सर, हाँ, वैसे इंडिया डायरेक्टली चाइना में या इनडायरेक्टली चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में नहीं कर सकता। इंडिया के वहां पे इतने इंटरेस्ट नहीं है, इतने कुछ उसमें करने के पीछे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट है उसमें, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ओपनली उसको चैलेंज या उसको क्रिटिसाइज करता है। मगर इंडिया का उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट स्टेक नहीं है, इसीलिए इंडिया उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, और ना ही इंडिया ने आज तक कभी उसको ओपनली क्रिटिसाइज किया है चाइना को लेकर। पाकिस्तान खुद नहीं करता सर। अरे अभी अभी करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि अभी करना पड़ेगा ना। चाइना जब अपने को दिमाग खा रहा, तो ऐसा कोई पॉलिसी किसी का न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया क्या ये लाइन से, ये पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने तो काफी दिनों से शिनजियांग में इंडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा सर। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स उस पर हमेशा उसको उठाते रहता है, अमेरिका। कितने लोगों, बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बता देता हूँ सर इन शॉर्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक शिनजियांग प्रोविंस है, ये जो प्रोविंस देख रहे हो ना, चाइना का एक प्रोविंस है ये, जिसको शिनजियांग बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शिनजियांग, ठीक है। शिनजियांग प्रोविंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये शिनजियांग प्रोविंस में जो है एक एथनिक माइनॉरिटी के लोग रहते हैं जिसको हम उइगुर बोलते हैं, उइगुर मुस्लिम्स, ठीक है।
स्पेलिंग चेक कर लेना इसकी, उइगुर मुस्लिम्स, ठीक है। वहां पर चाइना हमेशा ऐसा कहा जाता है कि इन मुस्लिम्स पर काफी एट्रोसिटीज करता है, इनको हमेशा डिटेंशन में रखता है, ठीक है। यहाँ पर बकायदा डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं चाइना ने, ओके। और ये काफी बड़ा इशू है दुनिया का, जो काफी काफी सारे देश इसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते चाइना को, ठीक है। और ये जो इशू है, ये जैसा म्यांमार में आपको पता होगा रोहिंग्या का इशू है ना, ठीक है, वैसे ही हालत यहाँ पर शिनजियांग में है मुसलमानों की, जिनको हम उइगुर एथनिक सिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको लगता है चाइना को कि ये लोग रेडिकलाइज ना हो जाए, ठीक है। और इसीलिए चाइना हमेशा इनके फंडामेंटल राइट्स, इनके जितने भी रिलीजियस राइट्स है, इनको कर्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पर लगातार उनको सप्रेस किया जाता है। तो ये वो रीजन है शिनजियांग प्रोविंस, इसको जो बोलते हैं, ये जो इंडिया का जो ऊपर का पार्ट से लगा हुआ है, ये ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की उसके बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये इनको सर एनडीए के स्टूडेंट्स को इतना पता होना चाहिए सिर्फ कि ये शिनजियांग प्रोविंस है और ये उइगुर मुस्लिम से रिलेटेड है। बाकी बहुत ज्यादा डीप में इनको जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एज लॉन्ग एज देयर रिटन एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो मैच द पेयर्स में यूपीएससी एक बार पूछ चुका है सर कि यहाँ पर प्रोविंसेस के नाम दिए हुए और यहाँ पर एथनिसिटी के जो लोग हैं उनके नाम दिए थे, जैसे रोहिंग्या इधर था और मैच द पेयर्स में इधर म्यांमार था। यहाँ पर उइगुर्स आ सकता है, यहाँ पे शिनजियांग आ सकता है, तो ऐसा मैच द पेयर्स में पूछा जा सकता है। सर और कुछ पूछना है आपको या फिर कुछ नहीं डिस्कस? मेरा हो गया सर। सर ये तो मंगोलिया, आपके मैप में मंगोलिया किधर है? मंगोलिया 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 सर देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मंगोलिया है। मंगोलिया इज सैंडविच्ड बिटवीन रशिया एंड चाइना। मंगोलिया का क्या पॉलिटिक्स है सर? उधर कोई है क्या लीडर? अच्छा लीडर है क्या? टाइम पास है सब? उनका इकोनॉमी का क्या है हाल? नहीं, मंगोलिया इतना कोई जियो पॉलिटिक्स में एक्टिव ये नहीं है सर, प्लेयर नहीं है इतना कोई बड़ा, उसके कोई इतने इश्यूज नहीं है, ना ही इतना कोई बड़ा एक्टिव प्लेयर है। हालांकि इंडिया के साथ उनके एग्रीमेंट थोड़े अच्छे खासे है। लास्ट ईयर ही इंडिया ने उनके साथ एक स्पेस डील साइन की थी, तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ उसका इतना इतना जियो पॉलिटिक्स में वो एक्टिव प्लेयर नहीं है मंगोलिया। वो चंगेज खान का वक्त था जब मंगोलिया का नाम था, अब इतना कुछ नहीं। ठीक है सर, कंटिन्यू करो। जी सर। नोमैडिक एलिफेंट मतलब क्या रहे? हेलो सर, चलेगा क्या? Students, am I audible? I think sir went. अच्छा सर कुछ बोल रहे थे आई थिंक, तो सर चले गए शायद बीच में। ओके ओके फाइन, चलो लेट्स get back to our important topic. So I was supposed to show you this particular map of Azerbaijan. Okay, why Azerbaijan is important? Why we discuss Azerbaijan? In what context we discuss Azerbaijan in our yesterday's lecture? Please fast. Acha, so I have to unmute him. Okay, wait. I don't know. Just a minute. So I'm unmuting from my side. Oh. Okay, very good. So हमने क्यों देखा था अजरबैजान? Because it was in news. ये Azerbaijan is a current chair of non-aligned movement. Okay, Azerbaijan is current chair of non-aligned movement. So you must remember one thing, that Azerbaijan is bordered by Russia, Georgia, Armenia, and Iran. Okay, and it opens up into a Caspian Sea. It opens up into a Caspian Sea. That is what you need to understand from this particular news, and you need to know about bordering state of Caspian Sea.
सो कैस्पियन सी को कौन कौन बॉर्डर करता है? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान. Only these 5 countries. Okay, this you must remember, and this is very important point is here. Okay, this Aral Sea. Okay, so the Aral Sea is between Kazakhstan and Uzbekistan. Okay, Aral Sea is between Kazakhstan and Uzbekistan. This is also very important point. ठीक है, you might get a question between how many states or between which states Aral Sea is bordering. Okay, so you must remember it's Kazakhstan and Uzbekistan. ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ का ज्योग्राफी इतना ही हम करते हैं. ठीक है, and let's move on. चलो, the next important thing of today's lecture is about global report on food crisis 2020. Okay, so global report on food crisis describes the scale of acute hunger in the world. ठीक है, सी ये जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस आती है, दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, बेसिकली ये रिपोर्ट का मकसद क्या है कि बाबा हंगर का कंडीशन क्या है दुनिया में, कौन सी कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद हंगर, who all countries are there are majority of hungers are there in which country वगैरह वगैरह. ठीक है, सो जो 2020 का रिपोर्ट आया है जो कि 2019 का लेखा जोखा देगा तुम्हें. ठीक है, ठीक है, 2020 में तो कंडीशन और भी खराब होने वाली है ड्यू टू कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स देयर विल बी ड्रास्टिक स्लोडाउन इन द इकोनॉमी. ओके, एंड ड्यू टू विच हंगर the cases of hunger might rise in all over the world. That is one important issue that we must take into account. Okay, see the global food. Yes sir. सॉरी सर, सॉरी मैं म्यूट कर दिया अपने आप को, निकल गया. हाँ बोलिए ना सर, आप कुछ बोल रहे थे, आप बीच में ही आपका आवाज चला गया. कंटिन्यू करो, कंटिन्यू सर. ओके, फाइन फाइन. ठीक है, so basically this global report on food crisis, it describes the scale of acute hunger all over the world. ठीक है, and there are in 2019 number of people living under food crisis are 113 million. 113 millions means how many crores? Please type in the comment box. Okay, so the top 10 countries that were under food crisis are Yemen, Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, South Sudan, Syria, Sudan, Northern Nigeria and Haiti. ठीक है, so you can see majority of the countries, almost all the top countries belongs to Asia or African continent. ठीक है, and as I have already told you, largest number of world's poor are there in these two continents. ठीक है, except Venezuela which is in South American continent, all other countries are either African or Asian. Am I clear on this? ठीक है, चलो, and the very important point which you must remember is who publishes this report, who prepare and publishes this report. So you might get a question that the global report on food crisis is produced by which of the following organization. So in that case you must remember the name of the organization. It is Global Network Against Food Crisis. Okay, so name of the organization which produces and release this particular report named Global Report on Food Crisis is Global Network Against Food Crisis. Is that clear? ठीक है, now थोड़ा सा अब जब ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस की बात हुई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लो. ठीक है, कि ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है क्या. ठीक है, सी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस इज बेसिकली एन इंटरनेशनल अलायंस. ठीक है, इट बेसिकली वर्क्स टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीम हंगर. ठीक है, रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीम हंगर. तो ये बेसिकली क्या करते हैं, असेसमेंट लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि बाबा ये हंगर के रूट कॉजेस क्या क्या है. ठीक है, क्यों इतनी गुर्बत है दुनिया में, उसके कॉजेस क्या क्या है, इसके इकोनॉमिक कॉजेस है, इसके क्या क्या सोशल कॉजेस है, या इसके कौन कौन से पॉलिटिकल कॉजेस है. इन सारे कॉजेस को वो असेसमेंट करता है एंड इट ट्राइज टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स. ओके, हाउ इट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी पीपल एंड इंडिविजुअल्स. ठीक है, उनको ये एड्रेस भी करता है और उनको एज अ स्टेक होल्डर वो कंसिडर करता है और उनको अपने ओपिनियंस देता है, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है ताकि रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स इस पर कोई स्टेप्स ले पाए. ठीक है,
सो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये इनिशिएटिव किसका था ये भी याद रख लेना. दिस इनिशिएटिव इज ऑफ यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ठीक है, ये तीनों ने मिला के ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, चलो. देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अंडर यूनाइटेड नेशंस. सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है या नहीं, ये भी पूछा जा सकता है. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रोमोटिंग फूड सिक्योरिटी. ठीक है, एंड विच कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस. क्या करता है ये? एड्रेस हंगर एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी प्रमोट करना मतलब क्या? टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड, नो चाइल्ड गो एम्प्टी विथ एम्प्टी स्टोमक. ठीक है, सो प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी मतलब यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फूड टू ऑल. There should be no shortages of food to anyone, right? So, and it was established by again Food and Agricultural Organization, okay, and the United Nations General Assembly. तो इतना याद रखना है. आप इसको पढ़ो फिर से एक बार. ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो read it once, okay, and if you still do not get it, please contact me anytime. चलो, next important news item is about Arctica M satellite. Okay, see, this Arctica M satellite is launched by which country? Can be a potential question. Okay, so it is launched by Russia, not launched by Russia, it is supposed to be launched by Russia. Okay, and Russia is all set to launch this satellite by the end of 2020. Okay, so you must remember Russia and the duration of its launch. By the end of 2020, this Arctica M satellite will be launched by Russia, on which rockets it will be launched using Soyuz carrier rocket. ठीक है, Soyuz carrier rocket. आपको Soyuz के बारे में आपने हमेशा सुना होगा. ठीक है, जितने भी ह्यूमन मिशंस, इंपॉर्टेंट ह्यूमन मिशंस है दुनिया के, वो Soyuz पर ही भेजे गए. ठीक है, so Soyuz is important in this case. ये जो Arctica M satellite है, that will also be launched using this Soyuz rocket. Okay, अब Arctica M क्या है? This particular is satellite is a remote sensing satellite and emergency communication satellite. ठीक है, अब ये याद रखना कि रिमोट सेंसिंग है और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. ठीक है, रिमोट सेंसिंग मींस व्हाट? फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कैन सेंस. रिमोट मींस क्या? रिमोट मींस डिस्टेंट थिंग. ठीक है, जो दूरी पर है. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये ऑर्बिट करेगा और वहां से यहाँ के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को वो सेंस करेगा, उसका डेटा कलेक्ट करेगा. ठीक है, एंड दैट डेटा विल बी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड to take corrective actions against the climate change and global warming. ठीक है, am I clear on this? So the satellite will monitor Arctic climate and environment. ठीक है, आर्कटिक ओशन जो है आपको पता होगा हमारे दो पोल्स है, राइट? एक है हमारा आर्कटिक और दूसरा है अंटार्कटिक. ठीक है, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही दुनिया में, ऐसा कहा जाता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने शुरू हो चुके हैं. ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ऑफ आईपीसीसी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स, ये जो आर्कटिक ओशन का जो ग्लेशियर है ना, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट विल मेल्ट बाय 30%. ठीक है, एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग थिंग, राइट? If the glaciers start melting, with huge amount of melting rate, then there will be huge large scale disaster all over the world, like floodings, right, tsunamis and other devastating effect of environment, which might displace millions of people all over the world. ठीक है, तो ये अंटार्कटिक का मेल्ट कैसे हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, वहां पे क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, वो सारा डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा कौन? ये आर्कटिका एम सैटेलाइट. ओके, एंड that is how it will help collect meteorological data from polar regions of the earth, and it will help improve weather forecast and will enable scientists to better study climate change. Am I clear on this? चलो, so आर्कटिका एम याद रखना और उसका एम क्या है वो भी याद रखना, कंट्री कौन सी है वो भी याद रखना. चलो, ऑपरेशन समुद्र सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट. Nowadays,
Why Operation Samudra Setu was launched? Because of the pandemic. ठीक है, see, because of this COVID crisis, COVID pandemic, Indians were struck, all over the world. ठीक है, they were not able to come back. Why they were not able to come back? Because of the lockdowns all over the countries. ठीक है, around all countries, almost all countries. So ऐसे में हुआ क्या था कि काफी इंडियंस फंस गए थे अलग अलग कंट्री में और रिटर्न नहीं आ पा रहे थे अपने देश में. ठीक है, सो ऐसे लोग, all those people who were stranded. ठीक है, so this particular Operation Samudra Setu was launched to repatriate all the Indian citizens from overseas. Repatriate means what? See, repatriate याद रख लो, वोकेबलरी में काम आ सकता है आपको इंग्लिश के लिए. ठीक है, repatriate means वापस लाना. ठीक है, to bring them back. Repatriate means to bring them back. Okay, so this Operation Samudra Setu was launched as part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas, right, in the backdrop of COVID-19 crisis, right? So Operation Samudra Setu ये स्पेसिफिक है ओशंस के लिए. ठीक है, ओशंस क्यों बोल रहा हूं मैं? आप देखो, ऐसा ही सिमिलर हमने वंदे भारत मिशन लाया हुआ है. ठीक है, अब वंदे भारत मिशन जो है ना, एक ब्रॉड कंसेप्ट है. वंदे भारत मिशन के अंडर हम जितने भी भारतीय फंसे हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सबको वापस लाएंगे हमारे देश में बाय यूजिंग एयरप्लेन्स और शिप्स और वगैरह कोई भी अदर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, सो ये हो गया वंदे भारत. अब वंदे भारत में और ऑपरेशन समुद्र सेतु में डिफरेंस ये है कि यू कैन से ऑपरेशन समुद्र सेतु इज अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु सिर्फ नेवी जो हमारे शिप्स है उससे ही लोगों को वापस लाएगा, इसीलिए समुद्र नाम है इसके अंदर. ठीक है, समुद्र. क्यों? क्योंकि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द शिप्स ओनली. ठीक है, शिप्स रिपैट्रिएशन, राइट. और वंदे भारत जो है ये ब्रॉडर है. ठीक है, ये कहीं से भी, मतलब एयरप्लेन से, शिप से वगैरह वगैरह, कैसे भी आप भारतीयों को वापस ला रहे हो, वो एक ब्रॉड वंदे भारत मिशन है. ठीक है, और समुद्र सेतु ये वंदे भारत मिशन का एक छोटा सा पार्ट है जो भारतीयों को शिप से वापस ला रहा है. ठीक है, आपको ये डिफरेंस समझ रहा है ना? समझ रहे? कितने लोगों को समझ रहा है? इज इट गोइंग स्मूथ? इज इट गोइंग स्मूथ? आर थिंग्स क्लियर टू यू or not going smooth? Let me know. You can interrupt me anytime and tell me, sir, it's not going smooth, we are not able to get what you're saying, so that I can change my strategy. Is it clear? Difference between Vande Bharat and Operation Samudra Setu. ठीक है, सो ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने कहाँ किया? हमने ईरान में किया, हमने मालदीव्स में किया, हमने श्रीलंका में किया. ठीक है, हमारे अलग अलग शिप्स को भेजकर. ठीक है, तो आपको समुद्र सेतु पूछा जा सकता है, और समुद्र सेतु के दरमियान कौन कौन से शिप्स को इस्तेमाल किया गया था ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, सो इंडियन नेवी सेंड्स INS ऐरावत. ठीक है, ऐरावत वाज सेंट टू मालदीव्स, एंड अगेन अदर शिप्स लाइक INS जलाश्वा, INS मगर and INS शार्दुल. All these ships were sent under this Operation Samudra Setu mission. Am I clear on this? So you must remember the names of the ships which were used under this operation. So INS Airawat, Jalashwa, Magar and Shardul. ठीक है, चलो नेक्स्ट, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान. सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग. ठीक है, सो सिर्फ पता होना चाहिए आपको, इसीलिए मैंने शॉर्ट में दे रखा है कि ये आपको पूछा जा सकता है कि सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान जो है. ठीक है, अब ये कोविड क्राइसिस में सबसे वल्नरेबल लोग कौन है? और एल्डरलीज. ठीक है, और एल्डरलीज आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन दिस पर्टिकुलर क्राइसिस. So in order to take care, and to ensure the well-being of this particular senior citizens during the COVID-19 pandemic, नीति आयोग has launched this particular program जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान. ओके, सो आपको याद रखना कि ये किसने लॉन्च किया था. तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री लॉन्च दिस सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान. तो आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, है ना. तो आपको लगेगा कि ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ऐसे में आप याद रखना ऐसा नहीं है. नीति आयोग और एक फाउंडेशन है जिसका नाम है पिरामल फाउंडेशन, ये दोनों ने मिलके इस पर्टिकुलर
अभियान को स्टार्ट किया है। एम आई क्लियर ऑन दिस? सो ये याद रखना है बस आपको। चलो मूव ऑन। नाउ लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। ओके, अभी एक रिसेंटली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। पब्लिश किसने की है? यूनिसेफ ने की, ठीक है। सो यूनिसेफ मतलब क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रंस फंड। सी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है, जिसको हम यूनिसेफ भी कहते हैं, ये जो है दुनिया में जितने भी इश्यूज है रिलेटेड टू चाइल्ड, उनको एड्रेस करने का काम करता है, ठीक है। लाइक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जितने भी इश्यूज है ऐसे, उन सबको एड्रेस करने का काम ये करता है यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ जो है एक और रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है लॉस्ट एट होम रिपोर्ट, ठीक है। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन which among the following organization publishes the lost at home report, so in that case you must remember it is UNICEF. Okay, now what this report is and what its findings are. See, only 2 minutes are left, so I let me conclude on this. See, lost at home मतलब क्या? कितने लोग दुनिया में कोई भी वजह से अपने घर खो बैठे? अब वो वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है। इट कुड बी नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। इट कुड बी अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। इट कुड बी अ इंसर्जेंसी, इट कुड बी अ टेररिज्म, ये कोई भी वजह उसकी हो सकती है। ड्यू टू ऑल दिस रीजंस पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कहीं फ्लडिंग्स हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? एक जगह से वहां से माइग्रेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, राइट। दूसरी जगह पे अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, लाइक म्यांमार इशू, रोहिंग्या इशू, अब वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस था, वहां पे वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो दोज पीपल माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस, दे आर डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है। सो ऐसे भी दुनिया में ड्यू टू वेरियस रीजन, वेदर इट इज नेचुरल रीजन और इट इज पॉलिटिकल रीजन, जो पीपल डिस्प्लेस हो रहे हैं उसका लेखा जोखा ये लॉस्ट एट होम रिपोर्ट देता है, ठीक है। एंड according to this report, lost at home, almost 33 million displacements took place in 2019, ठीक है। उसमें से जो है 33 मिलियन में से मींस 3.3 करोड़ में से 2.5 करोड़ जो है 25 मिलियंस, दे वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, ओके, एंड अदर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ठीक है। जैसा हम वेस्ट एशिया में देखते हैं, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट है, बाकी भी यूरोपियन की कुछ देशों में कॉन्फ्लिक्ट है। सो ड्यू टू ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और मगर मेजोरिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। इट मे बी अ ड्रॉट, इट मे बी फ्लडिंग्स, ठीक है, it may be any kind of cyclone or tsunami. So due to these reasons people are getting displaced, and in 2019 this way around 25 million people displaced due to the natural disasters, ठीक है। समझ में आ गया? about lost at home report published and prepared by UNICEF, you must remember this. Am I clear on this? Chalo, with this I think I have consumed my time. I'll see you tomorrow with another